Hello there, my dear students. Welcome to Grade 9 Physics, Topic Motion, Lecture number 7. Subtopic Equation of Motion. Learning objectives for today's session. Students will be able to understand and derive equation of motion using graphical method. So, to understand this lecture, I will suggest you to clear basic based on this lecture, that is acceleration topic हो गया, velocity topic हो गया. इसका जो previous topic है, अगर इसका knowledge आपके पास है, basic understanding आपके पास है, तो ये lecture आपको easily understand होगा. And also how to read a graph of velocity time graph and distance time graph. अगर आपको इसकी understanding है तो ये lecture आपके लिए बड़ा smooth जाएगा. So I will suggest you to go through the lecture number 5 and lecture number 6 before you visit this lecture. These are some of the reference books used for the session. NCERT Grade 9 Science, Physics by Lakshmi Singh and Manjit Kaur, Living Science, Physics by Thiran and Doshi, and Question Bank के लिए आप ये website refer कर सकते हो. This is not an official website from CBSE. ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है. क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर फ्री. So we know what is the rate of change of velocity, acceleration, the change in velocity of an object per unit time. उसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग acceleration is equal to change in velocity upon time. SI unit of acceleration is meter per second square. तो जो change in velocity जो होता है वो होता है final velocity minus initial velocity upon time taken. Initial velocity को हम लोग एक वेरिएबल सेट करते हैं वो है u. Final velocity को हम लोग एक वेरिएबल सेट करते हैं वो है v. Time taken को we already set a variable as t, and acceleration of the body को हम लोग वेरिएबल लेते हैं as a. So the formula for acceleration is a equals v minus u by t, or v equals to u plus at. तो ये हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन. सो बट हमें जो डिराइव करना है वो हमें डिराइव करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड. Equation of motion by graphical method. Now before we derive this equation we need to know this कि जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कंसिडर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो ऑब्जेक्ट जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, एंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, acceleration during its motion, and the distance covered by it in a certain time are called equation of motion. So there are three equation of motion. जो first है उसका फॉर्मूला है, उसका इक्वेशन है v is equal to u plus at. सेकेंड है s is equal to ut plus half at square. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as is equal to v square minus u square. Okay, so in exam either it can come derive an equation of motion, और वहां पे आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको यूजिंग ग्राफिकल मेथड आपको डिराइव करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और एल्स जो इस इक्वेशन के नाम है वो आपको दिया रहेगा एग्जाम में. फॉर एग्जांपल जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ओके, नाउ इन एग्जाम जब ऐसे टर्म्स के साथ आते हैं टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं
कि कौन सा इक्वेशन डिराइव करना है। यहाँ पे पोजीशन टाइम है, यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी टाइम। ऐसा जब इक्वेशन ऐसा जब टर्म्स यूज होते हैं क्वेश्चन में तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं डिराइव क्या करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू रिमेम्बर दिस नेम। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है सबसे पहले कि हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव कर रहे हैं वो डिराइव कर रहे हैं, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट्स शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो तीनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो A is common. A is there in the equation of motion. So I'm just showing you a trick. मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसका नाम कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे A चला गया। A हम लोग यहाँ पे A जो है एक्सेलरेशन को साइड में रख देते हैं और इसका नाम देखते हैं। अगर मैंने एक्सेलरेशन को साइड में रख दिया तो यहाँ पे टर्म्स क्या बच गए, यहाँ पे टर्म्स बच गया मेरा वेलोसिटी टाइम, तो इसका नाम हो गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इन सेकेंड इक्वेशन अगर मैं एक्सेलरेशन को साइड में रख देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस साइड में जो है टर्म है मेरा पोजीशन और ये टर्म में है टाइम। तो सेकेंड इक्वेशन हो गया मेरा पोजीशन टाइम रिलेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड इक्वेशन, अगेन मैं एक्सेलरेशन वाले टर्म को साइड में रखता हूँ तो मुझे मिलता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। While deriving any one of these three equations of motion, we need to consider three steps. First of all, if we are deriving this equation using graphical method, first step is consider a body having uniform accelerated motion moving along a straight line. Second step, consider the velocity time graph for a body that moves with uniform acceleration, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एंड द थर्ड स्टेप विल बी द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए। मतलब यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ कंसीडर करेंगे, हम लोग जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी नॉट इक्वल टू 0। दिस आल्सो विल डिस्कस इन द ग्राफ। So the first equation here we are going to derive is velocity time relation. So उसका मैथमेटिकल फॉर्म है v is equal to u plus at. So we will consider a velocity time graph. So here is a velocity time graph where जो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड में कि जो वेलोसिटी होता है वो y एक्सिस पे होता है, जो टाइम होता है इट्स एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए टाइम जो होगा हमारा x एक्सिस होगा। जो लाइन ग्राफ में जो हमारा x एक्सिस होता है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होना चाहिए जैसा टाइम। तो यहाँ पे टाइम हो गया हमारा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। ठीक है, नाउ इफ वी read this graph, if we read this graph, we try to decode this graph, तो यहाँ पे हम लोग ने थर्ड स्टेप जो कंसिडर किया था वो था इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। Initial velocity is not equal to 0 means object is moving with certain amount of speed जो definitely एक नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट ओ। तो एक सर्टन स्पीड से मूव कर रहा था, तो वो सर्टन स्पीड जो है हम लोगों ने कंसिडर किया है वो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, so next is the body accelerates. The body accelerates uniformly. The body accelerates uniformly in time t, acquire a final velocity v at point b. Acquire a final velocity v at point b. So जो हमारा final velocity हो गया from graph हमारा जो final velocity हो गया that is vc is equal to v. Okay, here we'll do some construction part जो यहाँ पे आपको dotted में दिख रहा है, that is the construction part. So the first construction we are doing is draw a perpendicular BC on time axis. Hence यहाँ से dotted line जो दिखा है ताकि आप differentiate कर सको, it's a construction part. ये extra आप कर रहे हो, draw perpendicular BC on the time axis. Next is draw perpendicular BE on the velocity that is y axis.
जो थर्ड हमारा कंस्ट्रक्शन होगा वो होगा draw perpendicular AD on BC. Okay, so after doing this, from the velocity time graph we get the following information. From the velocity time graph we get the following information. पहला जो है initial velocity at time is equal to 0, OA is equal to U. OA is equal to initial velocity. Now if you observe this figure carefully, you will observe that जो यहाँ पे एक यूनिवर्सल फिगर जो बन रहा है वो है एक रेक्टेंगल का, that is OADC is a rectangle. Hence, since OA is equal to U, DC is also equal to U, because opposite sides of a rectangle are equal. Okay, so final velocity at T is BC is equal to V. As we said that this is a rectangle OADC, so OC is equal to T. OC is equal to T, that is time. Therefore, AD will also be equal to T. Now we have seen that in that graph, if it's a velocity time graph, जो slope होता है वो होता है acceleration of the body. So the acceleration of the body is equal to slope of the line AB. And as we know, the definition of acceleration is equal to change in velocity upon time taken. तो A here change in velocity जो है यहाँ पे change in velocity जो है मेरा है वो है BD, and जो time taken है वो है मेरा AD. Okay, now if you observe that BC हम लोग एक लाइन सेगमेंट जैसा ले सकते हैं, BC को एक लाइन सेगमेंट जैसा ले सकते हैं, तो BC हो जाएगा BC equals to BD plus DC. तो यहाँ पे मुझे वैल्यू जो चाहिए है वो है BD का चाहिए, मुझे BD का वैल्यू चाहिए, तो DC I will move in the left hand side. Therefore BD is equal to BC minus DC. BD एक ही साइड पे रहा और DC लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, तो it becomes BD is equal to BC minus DC. ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं कि जो हमारा BC का वैल्यू था, हम लोगों ने फ्रॉम ग्राफ देखा था कि BC का जो वैल्यू था वो था V, और DC का जो वैल्यू था, since DC was equal to OA, उसका वैल्यू था U. BC का वैल्यू था V from the graph, and DC का जो वैल्यू था वो था U, as OA was equal to DC, उसका वैल्यू था U, and AD was equal to OC, तो उसका वैल्यू था T. So as we got the definition of acceleration, which is change in velocity with respect to time, तो अभी इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, अभी अगर आपने यहाँ पे भी इक्वेशन किया तो स्टिल इट्स एन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी करेक्ट है आपका, बट हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देते हैं. तो t को मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया, तो मुझे at इज इक्वल टू v माइनस यू मिला, और v इज इक्वल टू u प्लस at. So this is the first equation of motion, hence it's derived. Now for second equation of motion, that is position time relation, मैथमेटिकल फॉर्म है उसका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे भी हमारा जो स्टेप्स होगा वो सेम होगा, दैट वी विल कंसीडर फर्स्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform accelerated motion along a straight line, and the second step will be consider the velocity time graph for a body that moves with uniform acceleration as shown in the diagram. So तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो स्टार्टिंग के जो तीन स्टेप है वो सेम ही होगा. Now since here we are calculating for position, and as you are aware that
the distance traveled by the body is given by the area under the velocity time graph AB, which is equal to the area of trapezium OABC. So यहाँ पे जो distance travel है, that is area covered in velocity time graph. ये velocity time graph है और ये जो area आपको दिख रहा है, area covered जो है वो उसका जो geometrical figure है वो है एक trapezium का. So in this case, distance travel will be equal to area of trapezium. Distance travel will be equal to area of trapezium, and as you are aware that जो area of trapezium होता है वो area of triangle and area of rectangle होता है. So area of triangle ABD plus area of rectangle OADC. And area of triangle का आपको फॉर्मूला पता है, half into base into height, while area of rectangle is length into breadth. So triangle का जो base है यहाँ पे, हमारा ABD triangle का जो base है वो है AD and height है BD. In case of rectangle, OADC में OC हो गया length and OA हो गया breadth. So from the graph, let us assign now variable to this formula. जो हमारा OA हुआ वो हुआ हमारा U, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, that is the initial velocity. AD जो हुआ, that is AD is equal to OC. AD is equal to OC, वो हुआ हमारा टाइम. और BD ये हमें मिला है प्रीवियस इक्वेशन से. जो BD जो था हमारा वो था एक्चुअली BC माइनस DC, दैट इज V माइनस U, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है V माइनस U इज इक्वल टू 80 है. ये हमें कैसे मिला? एज वी आर अवेयर दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो V माइनस U जो हमें मिला वो है 80 मिला. तो BD का वैल्यू क्या हो गया? 80. ओके, सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, जब ये आप देख रहे हो वीडियो तो आप इतना पॉइंट जो है नोट डाउन कर सकते हो. एंड ये पॉइंट नोट डाउन करने के बाद वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला. जो भी वेरिएबल हमें मिला है वो अभी हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में. So after substituting, we get half into T into 80 plus T into U, which is nothing but S is equal to half 80 square plus UT. बस रीअरेंज इक्वेशन कर दिया तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Now again, for third equation of motion, which is position velocity relation, mathematical form हुआ उसका v square is equal to u square plus 2ac. तो स्टार्टिंग की जो स्टेप्स है वो सेम हो गए. हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा. हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो कहीं ना कहीं वापस से इक्वेशन में s है. तो अगेन वी विल टेक द सेम फॉर्मूला. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो एरिया इज जो है यहाँ पे एरिया जो हमें दिख रहा है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. Here I will take a different formula for area of trapezium, which is half of sum of parallel sides into perpendicular distance between them, that is into height. So sum of parallel side trapezium का क्या हो गया? OABC का sum of parallel sides क्या हो गया? तो मेरा trapezium है OABC. तो parallel sides क्या हो गया? OA and BC. तो उनका sum.
तो दैट इज OA प्लस BC इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर इनका हाइट क्या होगा, दैट इज OC। ओके, सो OA प्लस BC इनटू OC। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू OA प्लस BC, क्योंकि दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू हाइट या फिर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम था वो था OC, और ये इसका वैल्यू हमें मिला है पहले भी, एज OA इज इक्वल टू U, BC is equal to V, and OC is equal to time. So we are just substituting the values of OA, BC and OC. Will get this equation. Okay, so the equation is S is equal to half U plus V into T. Now here in this case we need to substitute the value of time, as the equation name for this is, equation name क्या है, equation name है position velocity relation. ओके, तो हमें टाइम कहीं पे भी नहीं चाहिए इक्वेशन में, हमें टाइम कहीं पे भी नहीं चाहिए इक्वेशन में, हमें चाहिए पोजीशन वेलोसिटी के बीच रिलेशन चाहिए। तो पोजीशन तो आ गया, वेलोसिटी भी आ गया है, ठीक है, बट हमें टाइम नहीं चाहिए। तो हमें टाइम के वैल्यू की जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ और सब्स्टिट्यूट करने के लिए, टाइम की जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प लूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर से, ठीक है। सो एज वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, विच इज अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। इसको आप एक्सीलरेशन के फॉर्मूला में भी याद रख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो अगर मैंने t को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और a को राइट हैंड साइड में ले आया, तो मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा। एंड हियर आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t which equals v minus u upon a, and this I will substitute in the above equation. So I will get that S is equal to half u plus v, as you all know that कि a plus b is equal to b plus a होता है, because addition is a commutative property। तो यहाँ पे u plus v की जगह पे अगर v plus u भी लिखते हो तो वो भी चलेगा। मैं इसलिए लिखने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस पे अभी फोकस करोगे तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गया है यहाँ पे। अगर ये दो टर्म को आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस shift whatever we can shift on the left hand side. If you observe here, we can shift 2 and a here in the left hand side, as both are in the denominator. 2 and a both are in the denominator, and we can shift that in the left hand side. So after shifting, what will I observe is 2as is equal to u plus v. यहाँ पे आप, मैं सजेस्ट करूँगा v plus u लिखो, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से फ्रेंडली नहीं है वो v plus u भी लिख सकते हैं, ये चलेगा। बट यहाँ पे आप u minus v नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप v plus u जरूर लिख सकते हो। तो दिस becomes an algebraic identity. So the overall equation is 2as is equal to v square minus u square. So this is the third equation of motion. That's it for today. Thank you for watching the video. If you have any doubt regarding the lecture, you can post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.